ये किचन जो कि पूरा फर्निश्ड और फॉल सीलिंग के साथ रेडी हो जाएगा। और जैसे कि नीचे वाला पोर्शन अपना पूरा 2 BHK शेप में है। दिस बेडरूम विल बी आल्सो डेकोरेटेड विथ सीलिंग एंड ऑल फर्नीचर। This bedroom will be the same, furniture and all the other equipments. Bathroom आपने देखा ही है. So this will be a 2 BHK flat. I mean on the ground floor. And after the hall will be totally decorated with false ceiling, POP, the modern furniture type. There will be sofa. Now अभी यहाँ पे सीमेंट है और सब. और ये मेन डोर, यहाँ पे काम चल रहा है. ये पूरा पोर्च, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी. अभी काम चल रहा है. नेक्स्ट ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ गुढी पाडवा, मराठी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने त्या दिवशी घराचे वास्तू होईल. सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर जहाँ हम रहेंगे. इट विल बी आवर ड्रीम हाउस, especially of my father. While serving in the army, we don't have a proper house, so it will be our proper house. From ages like after serving 26 years old, not old, but after 26 years, we didn't have a settled home, or you can say proper home. So, and after this year, next year we will having, this is the utility, which is a good way to cross from the kitchen to the direct main entrance. और अभी काम तो चल ही रहा है भाई. ये मेन पोर्च, ये पूरी बिल्डिंग. क्या मामू, बढ़िया हो रहा काम? है कुछ नहीं. कैसा हो रहा है काम, कैसा नहीं? वो टाके मारे ना, उसके लिए पूछ रहे थे बस, सही मारे कि नहीं. बोले हमारे सामने मारे. ठीक है, जास्त काय नाही म्हणले. फर्स्ट फ्लोर की तरफ काम चल ही रहा है भाई. ये फर्स्ट फ्लोर का पोर्च एरिया. यहाँ पे भी फॉल सीलिंग समथिंग टाइप है. दिस विल बी द बालकनी. देयर विल बी अ ग्लास. एंड पहले फ्लोर पे ये फर्स्ट सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा काफ़ी साइड में बड़ा बनाया गया. फॉर फर्दर प्लान्स इन फ्यूचर, दिस विल बी द हॉल विथ 3 साइड विंडोज. एंड ये उसका अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम. दिस इज द किचन, will be ready soon. ओके, ये इसका आउट व्यू होगा. सेम इस तरफ ही वही पैटर्न फॉलो किया गया है, बस इसमें एक एडिशनल गैलरी एडेड है. हॉल, दिस विल बी द हॉल. सेम टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड. द किचन, एंड वी हैव एन एक्स्ट्रा gallery for not me. Yeah, so this will be the gallery. Yeah. So we don't have a good view because in front we have a building, but we have some good space for air. And this is the left side of the building, and we have the frontal road, main road. Okay, so this is the view of the colony. And front, and it's right side. और एक सामने एक और साइड यूटिलिटी है जैसे नीचे थी. फॉर द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर, सेम वही पैटर्न. हॉल विद गैलरी, with gallery, good window. And this will be the kitchen. Okay. And this will be the utility plus attached toilet bathroom. We have planned this for कि air passing बहुत अच्छी है. We have
We have done big windows for this, and the area of balcony we can use it through also like utility and other appliances. So this is the back side of this building. We don't have so much space to plant trees, but I want to plant trees, but the plot was like not in a preferable size, so we have equipped all the land to build the building structure. So we didn't have left any more space to space for the plants. I wanted, but the area was so not suggestible for us, and it was very congested. So it is the second floor of our building, you can say, or house. So this is the free area on the terrace. The terrace is up, but this is the second floor. This is the one room. No, it will be kitchen, it will be attached toilet bathroom, and it will be the hall. Again, from the first floor, it varied the same. It has the gallery, a small gallery with a not nice view, but a view. And this will be another same section like we have done on first floor, and the another one is here. काम चालू है. This will be hall with 2 windows. That will be the kitchen. उसके बाद पीछे वहाँ ये टेरेस जाने का तरीका, और ये हम छत की ऊंचाइयों पे. सो दिस विल बी अवर टेरेस. यहाँ पे टंकियाँ आ जाएंगी. दिस विल बी दी रिमेनिंग पिलर्स विच कैन बी यूज एज ट्राई कर रहे हैं इसको कि बैठने के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाए. सो दिस इज द व्यू फ्रॉम माई टेरेस. यू कैन सी माई ब्यूटीफुल सिटी. दिस मेन white building is called MIT. So this is the beautiful view. In the second, the greenhouse is looking. This is my second house, my brother's house. The big buildings are my college, SRT college. Not my college, but my neighbor college. My college is besides it, Yogeshwari Mahavidyalaya, Ambesogai. So this is a beautiful area. All surroundings, and yes, this is a very holiest मंदिर होना बहुत ज़रूरी है. श्री बजरंगबली महाराज जी का हमारे घर के पीछे ही मंदिर है. एंड दिस इज़ द व्यू. अभी काम बहुत पेंडिंग है भाई. इट विल बी सून. विल बी हैव अ ग्रैंड ओपनिंग ऑन गुडी पाडवा द न्यू ईयर. सो it will be a dream house of my father, as I always said कि Subedar Saab का dream house. Yeah, the sun is okay, the view is okay, not cold but okay. So this will be from top to end. Oh, that our bike is standing there. DL. Yeah. We'll update soon further things. जैसे जैसे घर का काम होता जाएगा, I'll try to put some videos through YouTube. Yeah, and it's okay. Bye. Jai Hind.